Okay, chalo. So today we are studying the new topic, which is class 12th ka. Major big topic is what? In the 12th class, what is the big topic in the 12th class? Like in the first year, mechanics is the larger big topic, right? So 12th class, which is the biggest topic? Any branch, you know? Sorry. Electrostatics. No, electrostatics. No. Yes. So it is a big branch, which is electromagnetism. Sridham, write the new things. Class 12 we are studying. Okay. Electromagnetism is a very big branch. Okay. This branch अगर पढ़ने से आपको जेई मेंस में 30 to 40% of the questions will be coming from this branch only. Like mechanics कैसा है? So many chapters are there, right? Electromagnetism also so many chapters. Okay. So in this में it is basically divided into two parts. One is electrostatics and other one is electrodynamics. Okay. Electrostatics means what? What do you mean of static means? Charges at rest. Static means rest. Okay. In this way, we are studying electric charges and fields and electric potential capacitance. These two are comes under electrostatics. मतलब इसमें पूरा हम लोग चार्जेस रेस्ट में ही है. There is no nothing मूवमेंट नहीं है, ओनली चार्जेस एट रेस्ट. एंड दूसरा ब्रांच आएगा, एंड सेकंड ब्रांच which we are dealing is nothing but electrodynamics. Okay, Isha, come on, jaldi. Major branch in our 12th class is electromagnetism. It is divided into two parts, electrostatics and electrodynamics. Electrostatics means charges at rest. Okay, charges rest है, वो movement नहीं करने वाला है. And we have two topics in that, electric charges and fields, electric potential capacitance. And electrodynamics means charge in motion. Charge in motion, dynamics. You tell me, when the charges start movement, rate of flow of charge is called what? Rate of 10 class padhe na? Rate of flow of charge is called, per unit time में charges are flowing is called as, अरे बोलो, current rate of flow of charge is called, that's why current electricity came into picture. Charges start moving, right? Current electricity chapter का नाम है. Okay. And दूसरा भी पढ़ा है 10th class में, whenever current is flowing in a wire, what will happen to the surrounding? Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये अभी तक मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं. ओके, दैट्स व्हाई मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बिकॉज चार्जेस स्टार्ट मूविंग, राइट? दैट्स व्हाई दिस चैप्टर्स आर कमिंग टू पिक्चर. एंड इसमें हम लोग बार मैग्नेटिज्म, उसका प्रॉपर्टीज पूरा पढ़ने वाले हैं. एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी में आपको जनरेटर्स, ओके, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम एसी टू डीसी एंड ऐसा पढ़ने वाले हैं. अल्टरनेटिंग करंट, हम लोग अभी तक जो भी है डायरेक्ट करंट है, बट हियर अल्टरनेटिंग करंट करने वाला है. घर में अल्टरनेट करंट है या डीसी करंट है? विच करंट? Alternating. हाँ, अल्टरनेटिंग करंट आएगा, राइट? ऐसा रहेगा ना, अल्टरनेट करंट जुम 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 जुमल करेगा ऐसा. ओके, लिखो. So these are the chapter names. 30 to 40% of the questions coming from this is a bigger branch. And दूसरा branches are there, which is geometrical optics बोलते हैं. Optics is a branch. And दूसरा very important and very easy chapters, modern physics. Modern physics is a separate branch. It consists of three chapters and semiconductors. So bigger है, but notes अच्छे से लिख लो, excellent है, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला आपको. लिखो पूरा. We are starting this one, electric charges and fields. स्कूल में चैप्टर इधर उधर होने दो, नो प्रॉब्लम, बट लास्ट में कैसे भी कंप्लीट करने का पूरा ऑल चैप्टर्स करो. श्रीराम participate nicely, अच्छे से. टेस्ट लिखो बोले तो one person will tell mummy called, one person will tell after class sir 10:46 will tell sir can you extend the day time बोलेगा. हाँ, one person बीच में बंद हो गया बोल के, करंट गया बोलेगा. एक पर्सन लिखेगा नहीं है.
So she Sanvi is a good student and she only wrote all the things properly and she got first. Chalo. Okay. Chalo. Now we are starting electric charges and fields. The lesson name electric charges and fields. First chapter. Okay. So charges के बारे में little bit you know right? Charges किधर पढ़ा होगा आप? किधर पढ़ा? Charges lower classes में. Charges बोल के. इन्हीं सब्जेक्ट है. संस्कृत में पढ़ा और किस में पढ़ा? Chemistry. केमिस्ट्री पढ़ा होगा ना चार्जेस का. एटम में इलेक्ट्रॉन इज देयर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर नो चार्ज बोल के पढ़ा हुआ ना. हाँ, वो चार्जेस के बारे में पढ़ने वाला है. इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. सो फर्स्ट डिटेयली विल गो फॉर चार्जेस, उसका फॉर्मूलाज पूरा पढ़ने वाला है. देन वी विल गो फॉर द फील्ड्स. द फर्स्ट चैप्टर एज पर एनसीईआरटी, द फर्स्ट चैप्टर. ओके. नो, फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज. चार्ज का सिंबल है विच सिंबल? कैपिटल क्यू. क्यू क्यू लगा रहा है. ओके. व्हाट इज चार्ज अकॉर्डिंग टू यू? बोलो. चार्ज बोले तो क्या है? मतलब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं, बट व्हाट इज चार्ज? नहीं. चलो थोड़ा बड़ा डेफिनेशन 12th क्लास में आया, थोड़ा बड़ा डेफिनेशन देंगे. इट इज एन intrinsic property of matter. Very important. It is an intrinsic property of matter due to which matter experience electric and magnetic effects. See, because of charge only there is electric effects, electric field वगैरह will be there, and because of charges in motion वगैरह also magnetic effects will be there. So it is an intrinsic property. What is meaning of intrinsic property? Means fundamental property. फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब उससे नीचे कुछ नहीं है. सी आई विल टेल व्हाट इज मास इज मेड अप ऑफ. मास क्यों है? मास इज मेड अप ऑफ व्हाट मींस? सर मास इज मास ओनली. डेफिनेशन बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन इट. सो मास इज मास ओनली बोलेगा ना. सो इससे ज्यादा बिलो वी कैन नॉट गो. ऐसे ही चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी. उससे बिलो वी कैन नॉट गो. बिकॉज ऑफ दैट चार्ज ओनली देयर इज एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स. And is a scalar quantity, vector quantity, charge? Scalar. Scalar quantity. Simply there is no vector, simply addition of the normal things. Okay. So it is a scalar quantity. And SI units, anybody? SI units of charge. Coulomb. Coulomb, yes. Because SI unit is Coulomb. Okay. Dimensions बोल सकते हैं anybody? Satvik, your units and dimensions. Dimensions charge का बोलो. Dimensionless. Oh yeah, shabash. Wrong. Sir, LT inverse. No, just LT. No, why LT? Dimensions means not only LT, कुछ भी आएगा. See, ठीक है, ये 10 क्लास से नॉर्मल से आ जाएगा. करंट डेफिनेशन से आ जाएगा. I इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट? Q by T. नाउ कैन यू टेल? नाउ ट्राई करो. Q का डायमेंशन क्या होगा? फॉर्मूला तो फॉर्मूला दे दिया, IT. हाँ. So I is one of the 7 fundamental quantities में current also is there. उसका अरे करंट बोलो सामने. Ampere. Ampere. So A T. This is the dimensions of charge. AT. 7 fundamental quantities में ampere is one of the fundamental quantity. Okay. Ampere. Okay. And you know basic things. There are two types of charges: positive charges, negative charges. So positive charge क्या होगा? When I put positive charge, attractor repeller. हाँ, दोनों सेम जेंडर वाला जेड़ा करेगा ना. सो लाइक चार्जेस रिपल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. सपोज एक ऑब्जेक्ट से इफ
electrons are losing. This is neutral current, neutral thing. Okay, atom एक object है, electrons are losing, it becomes which charge? Electrons lose हो रहे तो Positive. positive charge. Similarly electrons gain हुआ तो Negative. नेगेटिव चार्ज. ये तो मालूम है ना बेसिक थिंग. ओके चलो, तो चार्जेस के बारे में डिटेल में अभी करने वाला है. चलो, नाउ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आई टोल्ड यू टू थिंग्स. वन इज चार्ज एंड दूसरा मास इज आल्सो वन ऑफ द इंट्रिंसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी. ओके, कैन यू टेल मी डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स? चार्ज एंड मास का डिफरेंस है, ये आपका एक्सपीरियंस से. चार्ज एंड मास, हाँ, 4 डिफरेंसेस बोलो, एक एक बोलो, एक एक. हाँ, बोथ आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक तो बोल दिया. बोथ आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. हाँ, नेक्स्ट. You said differences, no? हाँ, क्या क्या? हाँ, डिफरेंसेस ओनली. ओके, डिफरेंस मींस ओके, वी कैन कॉलम लगाते हैं ना 3 मार्क्स क्वेश्चन. हाँ, बोलो. डिफरेंस बोलो, बोलो. Mass is like amount of matter. The ओके, charge. चार्ज इज लाइक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलेगा. डिफरेंस, Um, हाँ, you can tell like charge can exist in both positive negative charge, right? Mass will have only one positive mass only, right? Like mass का kg है ना, 5 kg, -5 kg नहीं रहेगा ना सर, लेकिन ना पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव रहेगा. हाँ, दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग आई विल टेल यू. देखो, सी फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है both positive negative charge and this is positive only, right? हाँ, charge do not vary with speed. Very important. Charge do not vary with speed. मतलब अगर 5 coulomb charge in my hand, I am running with 2 kilometers per hour. Okay, the charge will be 5 coulomb only. It will not change with speed. Okay, but mass vary with speed. ये कौन बोला? मैंने बोला, आइंस्टीन ने बोला. Mass vary with speed, and he has given a formula in the first year में. Anybody remembered formula? Formula for mass vary with speed. Einstein which is given. Formula remember? लिखो, m is equal to m naught by under root 1 minus v square by c square. Okay, where m naught is the rest mass, and v is the object speed, and c is the speed of light. जनरली नॉर्मल टाइम में हमारा मास, देखो हमारा स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेसर देन द लाइट, राइट? कंपेरेटिवली बहुत लेस है स्पीड. दैट्स वे क्या होगा, दिस टर्म विल बी नेग्लेक्टेड. दैट्स वे m इज इक्वल m नॉट बोलते हैं. लोअर क्लास में हम लोग बोलते हैं कि मास इज कांस्टेंट. ओके, बट व्हाट इज आइंस्टीन टोल्ड दैट एनी ऑब्जेक्ट whose speed is near to the light speed or comparable to the light speed, then उसका mass increases बोल के बोला. Whenever object is near to the light speed, उसका mass will increase. Okay, tell me example. Suppose v is equal to c by 2. एक ऑब्जेक्ट है, उसका स्पीड इतना जा रहा है. ओके, आप सबस्टिट्यूट हियर कितना होगा? c by 2 होल स्क्वायर बाय c स्क्वायर. c स्क्वायर से कैंसिल, 1/4. 1 minus 1/4 is कितना होगा? 3/4. अंडर रूट में 2 आएगा, 2 विल बी कमिंग अपर साइड. सो क्या आएगा? m is equal to 2m naught by root 3. root 3 is 1.732. देखो, if it is greater than 1, right? मतलब mass is increasing. Can you tell me any object which is comparable to the light speed? Any object, anything comparable to speed? Proton. प्रोटॉन क्या करेगा? Okay, next. Any object which is moving near to the light speed. Come on, generalize this is basic things. Huh? Light Okay. itself. Light तो इसका speed है. Any object बोल रहा है. Okay, so actually electron revolves around the nucleus with near to light speed. Actually it is
10⁶ बोल के आएगा। ये लास्ट चैप्टर्स में हम लोग एटम्स ड्यूअल, मॉडर्न फिजिक्स में वही पढ़ने वाले हैं, एटम्स ड्यूअल नेचर में उसमें पढ़ने वाला है। ओके, इट्स स्पीड इज नियर टू द 10⁶ है ना, उसका मास स्लाइटली वेरी होगा। ओके, चलो, तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन। एंड दूसरा क्या है, देखो लास्ट डिफरेंस, चार्ज डू नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। असल चार्ज है बोले तो डेफिनेटली उसका मास होगा। ओके, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। देखो सपोज आई विल टेक ए न्यूट्रल बॉडी, एग्जांपल आई एम टेकिंग ए न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी के पास मास होगा कि नहीं होगा? मास इज देयर न्यूट्रल बॉडी, मतलब न्यूट्रल बॉडी मींस उसका चार्ज कितना है? टोटल चार्ज इज 0. So that means mass can exist without charge, but charge do not exist without mass. So, but then charge does not have mass as a dimension. Charge does not have mass dimension, sir. मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये sentence you are telling meaning? No. Why can't charge exist without mass? Because it doesn't have m in its dimensions, right? देखो any charge बोलो, कोई भी charge बोलो, लेकिन if I take electron, उसके पास mass होगा? Any charge will have compulsory mass. See, you tell me, एक object is there, इसका it is losing electrons, उसका mass क्या होगा? Will decrease or increase? It is losing electrons, right? Electrons जा रहे बोले तो definitely उसका some mass getting decrease, right? So mass is decreasing body में. Okay, so charge do not exist without mass. Charge है तो compulsory mass रहेगा. चलो, हो गया? नोट्स नीटली लिख लो, क्वेश्चंस प्रॉपर करो, फॉर्मूला शीट तो मैं दे दूंगा पूरा, टेंशन नहीं। एंड उसमें एनरोल कर लो, उसमें ओनली आई एम पुटिंग ऑल द वीडियोस फॉर क्लास 12th आल्सो। दूसरा विजन 12 बोल के मैं लगाया, उसमें एनरोल करने का टोटल फिर से एंडिंग तक रहेगा। ओके, हो गया अभी? चलो, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का बेसिकली 3 बेसिक प्रॉपर्टीज आते हैं चार्ज का। First one, simple, additivity of charge. Name itself indicating. What is meaning of additivity? Means adding charges. Okay, that means the total charge of a system is an algebraic sum of all individual charges located at different points inside the system. Suppose मान लो एक system में so many charges आते हैं, what is the total charge on the system means simply add करने का। and adding करने समय we should be very careful that we have to put with sign रखना पड़ेगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज। हो गया, चलो। So what is the total charge इसका? Tell me first, what is the total charge of the system? -1. -1, -4, -2, -2, -1 is -3 coulomb, ये माइनस है। ओके,
So -2. So additive is simply addition because scalar quantity है ना, so addition करने वाला है. Okay, next. Second property which we have to know is charge is conserved. बोलो, what do you mean of charge is conserved means? Okay, ठीक है. Energy is conserved means Final. energy can neither be created nor destroyed बोलते ना, उसका निकाल के charge लगा दो. Charge is neither be created nor destroyed, but only it can be transferred from one body to another body. Okay, but this definition 100% correct नहीं है because charge can be created also, charge can be destroyed also, which will there in radioactivity substance में. That's why आपको exact definition है this one. The total charge of an isolated system remains conserved or remains constant. Okay, इसका मीनिंग देखेंगे इसका क्या है बोल के. This is the correct definition. This is something like 90% correct only. Remaining sometimes में wrong because charge can be created and destroyed also. The total charge of an isolated system remains constant or conserved. Okay, क्या क्या इसका मीनिंग देखो. Suppose you have 3 coulomb charge, 2 coulomb charge, and 1 coulomb charge. Okay. ये आइसोलेटेड सिस्टम में, ओके, आइसोलेटेड सिस्टम में मतलब कोई भी कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी इफेक्ट नहीं है. ओके, ऐसा आइसोलेटेड बॉडी है. ओके, इसको मैं क्या किया, एक डब्बा में ऐसे जुम 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 बोल के ऐसे हिलाया पूरा. क्या होगा, द चार्ज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, चार्ज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. उसको वजह से मान लो इट बिकेम -1 कूलम, 3 कूलम. कैन यू टेल मी व्हाट इज द थर्ड चार्ज? बॉडी को ऐसा हिला दिया तो चार्ज गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस एंड आफ्टर दैट इट केम लाइक दिस. सो व्हाट विल बी द टोटल चार्ज? थर्ड चार्ज कितना होगा? 4. यस. व्हाई 4? बिकॉज टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. बिफोर चार्ज टोटल चार्ज कितना है, फाइनल आल्सो उतना ही चार्ज रहेगा. दिस कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. देखो, होंगे. नेक्स्ट, थर्ड एंड लास्ट प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. देखो पूरा चार्ज के बारे में पढ़ रहा है. क्वांटाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन? मींस क्वांटाइज्ड. इंग्लिश पढ़ते हैं ना? हाँ, बोलो शिवांगी. क्वांटाइज्ड. Made into small packets or something. नहीं नहीं ऐसा नहीं. सो देखो, क्वांटाइज्ड मींस सिंपल लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट. मतलब क्वांटाइज्ड मींस अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट. बेसिक लैंग्वेज मतलब मीनिंग क्या है? सपोज यू गो फॉर ए बुक स्टॉल टू बाई पेन्स, you will buy 1 pen, 2 pen, 3 pen, but you will not buy like 2.5 pen, 3.5 pen, right? ऐसे ही इसका क्या मीनिंग देखो, क्वांटाइजेशन मींस एग्जांपल के थ्रू देखेंगे. एंड व्हाट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? कितना है? ये है ना, याद है ना? 1.6 × 10⁻19 coulombs. ओके, आई कैन राइट लाइक दिस, इसको -1 E. E is the charge of electron, so it will exist, this charge will exist means आंसर इज यस, इसका चार्ज एग्जिस्ट है. ओके, इससे कंक्लूजन आएगा. देखो, whether this charge exists in the body, in the system में this charge can exist means देखो, I can write in terms of 2E. I can write because 2 times of charges is 3.2, right? So this also exists in the charge. Now see, whether this charge exists on the body means we cannot write in the format of NE. N is a number of electrons. Okay, so this charge will not exist. मतलब मीनिंग क्या है क्वांटाइज्ड का? चार्ज कैन ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज ओनली.
मतलब चार्ज ऐसा नहीं कि कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं होगा. इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज. इट कैन बी 2e 3e 4e बट नॉट लाइक 2.5e 3.5e और 6.5. ऐसा नहीं रहेगा. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ओके, लिख लो, डेफिनेशन लिख लो. सो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक फर्स्ट फॉर्मूला वी आर गेटिंग इन द 12th क्लास में, Q इक्वल टू NE. ओके, NE वेयर N इज इंटीजर, मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं. ओके, एंड E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. हम लोग वेरी डिटेल में जानेंगे पूरा, किधर भी डरने का नहीं है. इंटीग्रेशन आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा, सब कुछ सल छोड़ डालेंगे पूरा. वेव्स चैप्टर इज समवट बोरिंग चैप्टर. फर्स्ट फर्स्ट वेव्स किया तो थोड़ा बोर लगेगा स्टार्टिंग में. फर्स्ट इंट्रोडक्शन में वो समथिंग समथिंग बोलेगा, बट बीच में थोड़ा अरे व्हाट इज दैट हैपनिंग बोल के लगेगा. दैट्स व्हाई जनरली वेव्स लास्ट में डील करने का. हम्म, हो गया. So Q is a total charge on the body. This formula we done already in 10th class. First formula only if you see in 10th class हमारे notes में Q equal to NE बोल के रहेगा. Okay, so from this you are understood that any charge, ऐसा नहीं कि जो भी charge दे anything is possible बोल के नहीं रहेगा. Any charge cannot exist on the body. It is in terms of integral multiple only. Q equal to NE is a formula. N is an integer, right? चलो, now we'll go for the other thing. Question करने वाला है. हाँ करो. Can a body have this charge? Try करो. 8 into 10 power of minus 19. Can a body can have this charge or not? Yes. Okay. First one, yes. Second one, no. Okay. Why? रुको रुको दे. शिविंग कैसे करेगा? दिस इज टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, राइट? सो दिस इज Q का वैल्यू. Q इक्वल एनी. E वैल्यू नो, टोटल चार्ज का वैल्यू नो. N फाइंड करने का. इफ N इज एन इंटीजर डेफिनेटली दिस एग्जिस्ट इन द बॉडी. सो कितना आया N वैल्यू? हाँ, So for the इसमें first one, first one is 5. it's 5. हाँ. Second one is 0.5. So Which is 0.5 not exists, huh? No, it is not an No. integer. So we cannot, this charge cannot exist on the body. So Q equal to NEC we can find. चले करो. A particle has a charge this much. Calculate the number of electrons transferred to provide this charge.
6.25 into 10 power 6. Yes, 6.25 in 10 power of 6. मतलब उतना electrons अगर transfer होगा, then we'll get a positive charge on the body. This much charge will be there. So yeah, Manashura, n number of electrons means n we have to find. Q equal n में n we have to find. Okay. चलो next. I भी करो. आंसर बोलो. So question मत लिखो, just write the given conductor and solve. A conductor has a positive charge of this much. The conductor has dash electrons compared to neutral conductor. कितना? 9 more. Okay. Anybody? Nine more. 9 more. Okay. आप लोग का कितना है सनवे? 9 more. 9 more. क्यों more you like? सब लोग more बोलते हैं. ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है? Positive. ये पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो, डिफिशिएंट होगा तो, लेसर हुआ तो. Yes. तो 9 लेसर. Okay. Then only that become positive. Deficient. Okay. चलो. Now charging of a body. Charging of a body. एक बॉडी को चार्ज करने के लिए एक तरीका है. Some methods are there. Can you tell me any method how to charge a body? Charging a body मतलब आपको सपोज पॉजिटिव चार्ज देने का एक बॉडी को, कैसे कैसे देगा बॉडी को पॉजिटिव चार्ज? Go to shop and bring some positive charge. Example or एग्जाम्पल नहीं. हाउ टू चार्ज ए बॉडी, चार्जिंग ऑफ बॉडी राइट. एक न्यूट्रल कनेक्टर को दूंगा आपको, यू हैव टू मेक इट एज पॉजिटिव चार्ज. you remove the electrons? ओके. आ जाओ इलेक्ट्रॉन्स आ जाओ मींस जुम 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 बोल के आएगा. यस सही मेरे पास. चलो मेथड्स देखेंगे. मेथड्स का चार्जिंग ऑफ ए बॉडी में मेथड्स आर देयर. फर्स्ट मेथड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन. ओके. चार्जिंग बाय कंडक्शन व्हिच इज कॉल्ड डायरेक्ट कांटेक्ट मेथड. डायरेक्ट कांटेक्ट. सो इसका क्या करने वाला है देखो. सपोज आपके पास न्यूट्रल बॉडी इज देयर. हमारा इंटेंशन क्या है? उसको पॉजिटिव चार्ज बनने का, पॉजिटिव चार्ज बनाने का. सो मैं क्या करूंगा, एक पॉजिटिव चार्ज, टोटल हाई एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज बॉडी को मैं कांटेक्ट करूंगा. डायरेक्ट कांटेक्ट मेथड है ना, टच करूंगा न्यूट्रल बॉडी को. देन क्या होगा? द पॉजिटिव चार्जेस स्टार्टेड जंपिंग फ्रॉम हियर टू हियर. ओके. डायरेक्ट कांटेक्ट मेथड है, कंडक्शन मेथड है. सो क्या होगा? आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद इफ आई रिमूव, व्हाट इज दिस चार्ज? दिस चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज and this also positive charge. So we make neutral, this is neutral body, right? Neutral body. This is now becoming positive charge. Simply excess वाला positive charge को मैं direct contact बनाऊंगा. Because of this positive charges will jump to the connector and will get this positive charge. Okay. If इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी आएगा, एक थिंग आएगा. इफ बोथ कंडक्टर्स
are identical if both conductors are identical. Suppose मान लो here one charge sphere is there q1, other charge q2 is there. Identical means they material wise सेम है, सेम शेप, सेम साइज, ऐसा वाला को आइडेंटिकल बोलते हैं, बट चार्ज कैन बी डिफरेंट. ओके, इफ दिस टू चार्जेस को मैं कांटेक्ट बनाऊंगा, कांटेक्ट लेके आ रहा हूँ, मतलब टचिंग कर रहा हूँ, डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा हूँ, देन आई विल सेपरेट, then I will separate. Can you tell me what is the charge on this body and what is the charge on this body? Same. No. डिफरेंट चार्ज है ना, डिफरेंट चार्ज थोड़ा ट्रांसफर होगा, इधर उधर ट्रांसफर होगा ना, बेस्ड ऑन द थिंग्स करके फाइनली चार्ज क्या होगा मालूम है, एवरेज हो जाएगा q1 प्लस q2 by 2, इधर भी q1 plus q2 by 2. Very important. Whenever identical conductors are there, your charge get, मतलब when they brought in contact, the charge will become average of the two things, q1 plus q2 by 2 and q1 plus q2 by 2. This is called charging by conduction. So what happens if instead of a neutral charge we put a body which has negative क्या? charge? So instead of a neutral charge, what if the body You want has a to negative you want to make negative charge, हाँ? Yes. हाँ, so क्या Is that करें, नेक्स्ट possible? नेगेटिव चार्ज बॉडी को लेके आने का, एक्सेस नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आने का, टचिंग करने से इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड फ्लोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. ओके, like you know automatically this will happen, you know normally. एक कंटेनर बीकर में पानी फुल है, एक बीटर में कुछ भी नहीं, एम्प्टी है. if I make a pipe from these two connection, automatically because of pressure difference it will flow, right? This is called charging by conduction. Now second, okay, इसके बेस में वन क्वेश्चन कर रहेंगे, हो जाएगा. Finished? Yeah. ये करो. Object A, B, C are three identical. Okay, spherical conductors are there. Okay, A, B, C. A and B both have charges plus 3 coulomb. This is A, B, and C plus 3 coulomb. And C has a charge of minus 6 coulomb. Okay, now क्या किया वो? Object A and C are allowed to touch. A and C पहले touch किया. And they moved apart. Now tell me, what will be the charge A and what is the charge B? C में कितना होगा? After touching and removing. -3/2. Yes, -3/2 coulomb, and here also -3/2 coulomb. Okay. Then क्या किया? Object B and C are allowed to touch, and they moved apart. Now B and the new C, A allowed A touch किया. Okay, and moved apart. Now tell me कितना होगा? B का 0. कितना होगा? And C का कितना होगा? No. The new C and B वाला, old वाला. 3/4. Plus or minus? 3/4 only? Yes. 3/4 coulomb and 3/4 coulomb. Okay, now what is saying? The final charges on A, B, C. So A ka is -3/2 coulomb, B ka is 3/4 coulomb, and C ka is 3/4. This answer. So way of asking will be in this way. That's why identical है तो average बोल के आपको समझ में आने का. Okay, next Sir, I one. have doubt. Tell me. All three are touching, then is it the average of all three of them?
ऑल थ्री आर टचिंग बोलते तो उसका फॉर्मूला नहीं है, बट इसका दो दो है, दो दो टच करने वाला है. ओके, नेक्स्ट. चार्जिंग बाय इंडक्शन. इंडक्शन मीन्स विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, टच नहीं करने का. विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट वी हैव टू मेक इट इज ए पॉजिटिव. सपोज आई टुक ए neutral body. Neutral body means number of positive charges is equal to number of negative charges. 1 2 3 4. ये वाला न्यूट्रल बॉडी दिया. ओके, इसको मैं पॉजिटिव चार्ज बनाने का विदाउट टचिंग. तो ट्राई क्या करेगा? विदाउट टचिंग आई शुड मेक दिस बॉडी एज पॉजिटिव चार्ज. Can you do it by radiation using the photoelectric effect? ये आइंस्टीन जैसे बात करते प्रॉब्लम हो जाएगा. नॉर्मल इस चैप्टर में आ जाओ. Magnet. हाँ, क्या क्या? Magnet. मैग्नेट लेके तो क्या होगा? All हाँ. the like charges will separate to two sides depending upon. नो, वो न्यूट्रल बॉडी है. एक न्यूट्रल बॉडी में दिया, एक स्फीयर दिया. दिस ईशा, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल बॉडी. यू मेक दिस एज पॉजिटिव चार्ज बोल के मैं गया. हाँ. Yeah, क्या if we put a magnet, then the positive charge will move to one side and the negative charges will move to one side. मैग्नेट से ओके ठीक है. पॉजिटिव चार्ज विल मूव दिस साइड एंड नेगेटिव चार्ज विल मूव दिस साइड. ओके, इफ आई रिमूव मैग्नेट अगेन इट विल बी रीअरेंज. बट आई वांट पॉजिटिव चार्ज, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज. मतलब हाँ. एनीथिंग? चलो ट्राई करेंगे, इंडक्शन मेथड से करेंगे. तो मैं क्या करूंगा, पहले इस बॉडी को, इस बॉडी के नजदीक में आई विल ब्रिंग ए नेगेटिव चार्ज बॉडी टू दिस न्यूट्रल बॉडी में. विदाउट टचिंग आई ब्रॉट नियर टू दिट. ओके, करने से क्या होगा? द पॉजिटिव चार्जेस विल बी कमिंग दिस साइड बिकॉज अट्रैक्शन होगा ना, एंड नेगेटिव चार्जेस विल बी गोइंग दिस साइड. राइट, सेपरेशन विल टेक प्लेस ऐसा पहले. ओके, नाउ हमारा इंटेंशन क्या है? इट वांट टू मेक पॉजिटिव चार्ज, राइट. सो हम लोग क्या करेंगे, इसको नेगेटिव चार्ज को निकाल देने का, राइट. देन ओनली विल गेट पॉजिटिव चार्जेस. सो निकालने के लिए आई विल डू अर्थिंग करूंगा. अर्थिंग मीन्स द पोटेंशियल इज जीरो. द पोटेंशियल इज जीरो. तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग टू द अर्थ. हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सो पूरा निकल जाएगा. आफ्टर दैट, ये तो ऐसे रहने का. आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम के बाद, इफ यू रिमूव दिस वन एंड अर्थिंग, इट बिकम्स ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी. Okay, this is called charging by induction. Here one thing you have to understand is this is called near end because a rod is near to this one, right? And this is called far end, right? Okay, near end will be the opposite charge, same charge near end. This rod say near end will be always opposite charge. They will ask like this: near end is opposite charge in induction, and farther end is same charge. Without touching, we made this as positive charge. Sir, what is the rod? Huh? Sir, what's the rod? मतलब wicket next to you can bring any negative charge body near to it. It's not only this one. You can bring this negative charge body sphere to the near to it.
Okay. Last method is there. Last method, which is nothing but charging by, ये तो हो गया, charging by friction. Charging friction. ये तो old method है ना, friction rubbing वाला. So what is the meaning of that one? It is a process in which two objects are rubbed together, causing the transfer of electrons from one object to other object. See, when you rub, right, the electrons will transfer from one body to other body. That's why one body will become negative charge, one body will become positive charge. Okay. So this is by this only actually, Greeks, they understood that something is there inside. मतलब atoms thought atoms में some charges are there बोल के they told about the positive charge, negative charge, electrons were discovered. Okay. Leading to one object gaining a positive charge and other object gaining a negative charge. So I'll give examples. उसमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है उसमें. Just which one is positive, which one is negative बोल के आप बोलना पड़ेगा. I'll give one example where glass rod and silk cloth. एक silk cloth लिया, glass rod लिया, I rubbed. You tell me which one is positive charge, which one will be negative charge. See, definitely it depends on the material होगा ना, मतलब some are near to the nucleus bonded रहेगा, some are far from the nucleus loosely bond रहेगा. So loosely bond वाला electrons will jump. So ये positive हो जाएगा, negative हो जाएगा, ऐसा. You think and tell, I'll check. Glass rod and silk cloth. Silk will have negative. Okay, glass rod will have positive charge. Why you done experiment? No, I remember. I think you Okay. asked me. Okay, Sanvi, I guess silk cloth and glass rod. Okay, cut only. She told glass rod with rub with silk. The glass rod loses electrons and become positive charge. आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. क्या बोलेगा? Glass rod will acquire a positive charge and silk cloth will acquire a negative charge. ये short form में लिख लो. And same thing, if I given ebonite rod and fur, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. Okay, now the ebonite rod will be negative charge and fur will becomes a positive charge. उल्टा, इसका याद रखने का. Some examples याद रखो. Theoretical अगर पूछेगा तो suddenly we can able to understand. एंड छोटे में क्या होगा ना, हम लोग कोम्ब हेयर एंड बेलून एंड इसका रब किया तो क्या होगा? बेलून एंड हेयर which is getting positive, which is negative. बेलून से zoom 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 रब करके pieces of papers को भी अट्रैक्ट होगा. राइट है तो रॉन्ग है तो बोलो शिवंगे. बेलून will be positive, negative. It'll be positive. Okay, देखेंगे. Anybody you want to change anything? Don't know sir. Okay, so देखेंगे. Okay ना ये वाला? हाँ. Just short form लिखो, पूरा मत लिखो. Ebonite rod will become negative charge and fur will become positive charge. देखो balloon rub with it, the balloon gains electrons become negative charge. Balloon become negative and hair becomes positive charge.
Sir, Hmm. so why does the balloon become negatively charged and not positively charged? Basically, उस मटेरियल सी ये वाला आपको समझ में आने का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस राइट Yeah. एक एक मटेरियल का एक एक रहेगा ना सपोज एग्जांपल एल्यूमिनियम होने दो कॉपर होने दो एनी मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन विल बी देयर राइट इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर सपोज मान लो इलेक्ट्रॉन्स हैज वन शेल सो ए बॉन्डेड ज्यादा रहेगा कम रहेगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट राइट पकड़ के Attract. रखेगा सपोज सेम थिंग इफ वी बिगर कॉन्फिगरेशन रहेगा सपोज इलेक्ट्रॉन्स आर फार फ्रॉम द न्यूक्लियस राइट ये लूजली Less बॉन्डेड है effect. अगर रब Yeah. किया तो वो हीट का वजह से इफ यू गो डेप्थ में आयोनाइजेशन एनर्जी वजह से the electrons will jump to the body other body so that is gaining negative charge this is becoming positive charge ऐसे material के हिसाब से रहेगा so that's why here balloon is getting the negative charge and here is getting a positive Yes. Okay. Yes. clear सब लोग का so these are the things in the first में ऐसे adjustment